Hi students, good morning and welcome to the legal game presented by Unacademy. And I will just change. I think I have opened the wrong class. So yes, we have opened the right class. Only the topic here is written wrong. This class is not related to introduction to ADR. Don't worry. So yes, गलती इंसान से ही होती है, हम भगवान नहीं है. So yes, obviously only human commits mistake, and I'm also a human. This class is related to important doctrines, as you can see in the title text and the thumbnail of this video, that this class is for important doctrines from the constitutional law. Important doctrines of constitutional law. I'm Sarthak Sharma. I hope you all know very well. You all know me very well. Still, I will give you a short intro of myself. But before that, I wish you a very happy good morning. I wish that you have a prosperous day and a wonderful life ahead. एंड चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी स्विच ऑन द लाइव चैट्स बिकॉज interaction makes classes wonderful classes. Okay, the live chats are on my screen. हाय स्मिता, गुड मॉर्निंग. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ. Let me give you a short intro of myself. I am Sarthak Sharma. I have more than 2 years of teaching experience and I have mentored more than 10,000 students. I always say this thing, मैं आज दोबारा कहूंगा. I will again repeat that I have been less of a mentor and more of a companion for my students. मैं अपने students का companion रहा हूँ, साथ ही रहा हूँ उनकी preparation journey में, and a lot of my students have reached their target destination, their dream colleges. So yes, I can proudly say that in under my companionship, a lot of students have been rankers. I have produced a lot of rankers in the top law entrance examinations of this nation, and I hope through this platform, you people are also going to add your name in this list. You and me will make sure that we will add your name to this list. You can join me on Telegram. The Telegram group link is on your screen. Also in the description box, the Sarthak Sharma, the legal game. On the Telegram, I will share the homework, the class notes, and also the schedule of the classes. And also, I will adhere to your doubts. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं in the live classes as well as in the Telegram group. Hi Tisha, good morning. You can have subscription of an academy for either of the following term, and you can use the code SRT10 as well to get an additional 10% discount. 10% additional discount के लिए SRT10 use कर सकते हैं. Also, you can use SRT10 to unlock the free features at the Unacademy app. So just download the Unacademy app and use the code SRT10 and see the magic. See the magic in your preparation as well. And my profile link is in the description box. I have taken a lot of classes. I'm going to take in future as well. Free classes, so you can attend them also. Students, these are the unique features of Unacademy. These 6 are some among a lot more unique features. U in Unacademy stands for uniqueness. So it is a unique academy where teaching is made simple, enjoyable, interesting, efficient, and effective for all of you. And that's why I say that an academy is the most wonderful platform. And equally wonderful are its students. हमारे students भी उतने ही wonderful हैं जितना wonderful है platform. The live quiz feature for the students. This feature is for the wonderful students who do not only want to who do not only want to participate, but they want to host their own quiz as well. Yes, so you can host your own quiz and help your fellow mates to grow your knowledge, grow their knowledge, and yes, obviously grow your knowledge as well. Because knowledge is something that multiplies when you share, multiplies. ये बढ़ती है. I hope you are appearing for an Academy Law Aptitude test. If not, then every Saturday, keep this thing in mind. Every Saturday at 11 a.m. कोई भी जरूरी काम हो उसको छोड़कर an Academy के application पर जरूर आ जाइएगा. Because at 11 a.m. every Saturday we come up with an Academy Law Aptitude test for your weekly practice. It is absolutely on the CLAT new CLAT pattern. It's a 60 minutes, 60 questions, 60 marks test,
and you should appear for it. The weekly T20 test. Who won the World T20? Australia again. Australia फिर से जीत गई. And so please tell how to increase your mock marks. Trisha, for that I told you the strategy, the best plan to prepare. Have you seen that session? I've taken a special class on the best plan to prepare for CLAT 2022. उसमें मैंने कुछ strategies बताई थी पढ़ने की. It was my strategic session. Have you seen that session? If not, then go and watch that class. It is available on this platform on the legal game only. Legal game पर मेरी ये class available है. The best plan to prepare for CLAT 2022. It's my strategic session जिसमें मैंने आपको सारी strategy बताई थी that how you should prepare for CLAT. Obviously, these strategy is also going to help you in maximizing your marks. ये marks maximize में भी help करेगा. So do watch this session first. This class is available on the Legal Game YouTube channel only. So yes, Australia won the World Cup. Although हमें hope था कि इंडिया लेकर आएगी ट्रॉफी होम, बट उससे भी ज्यादा होप मुझे है कि you will bring your trophy home and the trophy for you is All India Rank 1 in your target examination. और अगर आपको वो ट्रॉफी लानी है, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए अपने टारगेट एग्जामिनेशन में, देन यू कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्लेयर फॉर यू. Consistency is going to be the biggest player, and consistency maintain करने के लिए, build करने के लिए, we have come up with the 20 minutes revision test for your everyday practice. It's just a 20 minutes, 20 questions, 20 marks test from Monday to Friday. There are 5 different weekdays and there are 5 different sections in your law entrance examination. Each section has a specific weekday and you just need to take out 20 minutes out of your 24 hours. 24 घंटे में से 20 मिनट निकालने हैं. Okay, it's not a big thing. You should do it. The special class features. These are the free classes. Special classes are free classes on Unacademy app. You do not need to pay anything for these special classes. I've taken a lot of special classes. A lot of other teachers have also taken. You can join the special classes. You can attend them either in the live mode or if you are not available और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या कोई भी पर्टिकुलर रीजन है लाइव के टाइम पर, तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं. To unlock the free classes, the special classes, you can again use the same code SRT10. These are some features of the special classes that you can use, like raise a hand. Abhi Trisha, you asked me a question. Okay, the question you typed in the live chat. But if we are interacting, if we are having a class on the special class platform at an academy, so you just need to use the option of raise hand and you can directly talk to the educator. इफ यू हैव एनी डाउट, आपको लगता है कि कोई डाउट है और उस डाउट कोई नोटबुक में आपने डाउट देखा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको टाइप करें. यू कैन डायरेक्टली टेक द पिक ऑफ द डाउट और आप उसको वहां पर सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली टू द एजुकेटर इन द लाइव क्लास. यस, so there will be polls for the learners whenever we will have a quiz. तो आपको polls मिलेगा so that you can analyze your where you are standing. You can know your standing. Okay, so use these special classes features in the special classes of an academy. Let's start with today's class. What you are going to learn today? आज आप क्या सीखने वाले हैं? As I told you that in today's class we are going to discuss the most important, not only important, the most important doctrines under the most important law of India, the Indian Constitution. तो ये तो डबल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ की मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हम आज समझने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स of the most important law of India, the Indian Constitution, the supreme law of the land. So what you are going to learn today, I am changing this question. No, I'm not asking what you are going to learn today. After this class, I'm going to ask you, I'm going to come back to this slide और मैं आपसे पूछने वाला हूँ, what did you learn today? What did you learn today? What you are going to learn today, ये तो आपको भी नहीं पता, अरे मुझे पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं. मैं आपको I'm just going to start the class and after the class I will come back to this slide and I will ask you that what did you learn today and then you have to answer it.
So let's start. The first important doctrine and the most important doctrine of the Indian Constitution is the doctrine of basic structure. The doctrine of basic structure. Have anyone heard about it before? Obviously आप सभी ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो सुना या नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का नेम तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने भी सुना होता है, बट ही इज नॉट कंपेटेबल टू बी अ लॉ स्टूडेंट. इफ यू आर अ लॉ एस्पिरेंट तो थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है. द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केम इन इंडिया. If we let's talk first of all about its origin. So the doctrine of basic structure came in India, and in this case 1 and the Bharti case versus state of case 1 and the Bharti versus state of Kerala. इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ इन इंडिया, बट व्हाट इज इट्स एक्चुअल ओरिजिन? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले कहां आया? क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? इट केम इनटू इंडिया बाय दिस केस, बट इट केम इनटू द होल वर्ल्ड. ये सबसे पहले कहां आया? इट केम इन द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन. रिमेंबर, जर्मनी में. क्यों आया? जर्मनी में जो नाजी रिजाइम था उन्होंने लॉस को पूरी तरह से बाईपास कर दिया था, लॉस को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया था, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज एन अमेंडमेंट मेड टू द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन related to the basic structure doctrine so that some basic laws can be protected. So after the Nazi regime, नाजीज के रिजाइम के बाद, आफ्टर नाजीज रिजाइम, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया टू ऐड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सो दैट नाजी रिजाइम कब खत्म हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इन 1945. आफ्टर दैट देयर वाज एन अमेंडमेंट टू द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन was added. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऐड किया गया जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड बाय दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सम बेसिक लॉज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अमेंडमेंट. ओके, जो बेसिक लॉज है उनको प्रोटेक्ट करना मेन पर्पस था इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का. जो बेसिक लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट करते हैं, आप उनको डिस्ट्रॉय या डिसमेंटल या अमेंड नहीं कर सकते हैं. ओके, तो टू प्रोटेक्ट बेसिक लॉज ऑफ जर्मनी. आर यू क्लियर टिल हियर? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन. सो जर्मनी में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया. क्वेश्चन आए तो आप बता देंगे दैट इन विच नेशन. एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडिया केम इन 1973 इन केस 1 इन द भारती केस. इसकी भी स्टोरी यही है कि द होल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टेड फ्रॉम शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस. देन गोलकनाथ केस पूरी तरह से प्रो जुडिशरी जजमेंट था, जिसमें कहा गया कि दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड. After Golaknath case 1 and the Bharti case came, and case 1 and the Bharti case was at a mediocre level between Shankari Prasad and Golaknath case. Okay, in this case, Supreme Court held that fundamental rights or any part of the Constitution can be amended, but basic structure cannot be destroyed. और Supreme Court ने यहाँ पर ही basic structure की एक पूरी list बना दी. List of things that constitute the basic structure. Like federalism is the basic structure, secularism is the basic structure. These things cannot be destroyed. Parliamentary form of government is a basic structure. All right, good morning, Tasik. So there is a huge list of basic structures of the constitution. There is a huge list. और ये लिस्ट हर केस के साथ बढ़ती गई. जैसे जैसे एक नया केस आया, लिस्ट में और एडिशंस हो गए. द लिस्ट started from case 1 in the Bharti case, and in a lot of cases this list kept on growing. लाइक एक केस आया था 1973 केस, सिर्फ 2 साल बाद 1975 में. द नेम ऑफ द केस वाज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण. व्हाट हैपेंड इन दिस केस? वेरी इंपॉर्टेंट केस. कोई बता सकता है व्हाट हैपेंड इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण? 39th अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेकर आई थी, एंड बाय 39th अमेंडमेंट व्हाट डिड द पार्लियामेंट डिड? लेट मी टेल यू द स्टोरी फ्रॉम स्टार्टिंग. इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, उनका रायबरेली से जो इलेक्शन था वो डिस्प्यूटेड हो गया था,
एंड ड्यू टू दैट कोर्ट में केस गया एंड शी वाज जस्ट हर इलेक्शन हर कैंडिडेचर फ्रॉम रायबरेली वाज जस्ट गोइंग टू बी कैंसिल्ड. हाई कोर्ट कैंसिल करने ही वाली थी, तभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लोकसभा में वो एक नया लॉ लेकर आई, द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. व्हाट डिड द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड? The government of India bought 39th amendment, and by it कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट, कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट which is related to the election of prime minister and speaker of Lok Sabha, लोकसभा स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है, then it does not falls under the jurisdiction of any courts. So it is outside jurisdiction of all courts. ये अमेंडमेंट, ये 39th अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया, दैट इलेक्शन डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स. बट व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस डिड? सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड दिस अमेंडमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट कर दिया. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट केस. सर तो वो लिस्ट कहां है? ट्रैसिक वो लिस्ट स्पेसिफिकली कहीं दी नहीं हुई है, वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में है. लाइक यू विल रीड द बेसिक द केस वन एंड द भारती केस जजमेंट, तो उस जजमेंट में आपको लिस्ट मिल जाएगी. देन यू विल रीड द मिनेर्वा मिल्स केस, तो उस लिस्ट में और एडिशन हो गया है. इन एसआर बोमई केस एक और चीज सेक्युलरिज्म ऐड कर दी गई बेसिक स्ट्रक्चर में. इन इंदिरा नेहरू गांधी केस अगेन सम थिंग्स वर एडेड. सो द लिस्ट इज नॉट एक्सक्लूसिवली एनीवेयर. सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट बनाई केशवानंदा भारती केस में, और उस लिस्ट में एडिशंस होते गए आने वाले नए केसेस में. क्लियर? सो देयर इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हिच सेज दैट जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने या हाई कोर्ट्स ने बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट में ऐड कर दी है, उनको आप अमेंड नहीं कर सकते. उसके अलावा आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. जुडिशियल रिव्यू के बाहर किया था उन्होंने. यस, जुडिशियल रिव्यू के बाहर किया था जैसे. एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. In Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, it was held that judicial review is the part of basic structure. Judicial review is the part of basic structure of the constitution. No, you do not need to remember the whole list. Classic. Just some things that are important. Judicial review is a part of basic structure. Federalism is a part of basic structure. Secularism is a part of basic structure. Parliamentary form of government is a part of basic structure. These things are important. Okay? Not the whole list is important. So I hope the doctrine of basic structure is clear to you. ये कहां से originate हुई? जर्मनी से. ये इंडिया में किस केस से आई? केशवानंद भारती केस से. ओके, एंड यस आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू द होमवर्क. 1950 में शंकरी प्रसाद केस से, देन सज्जन सिंह केस, देन गोलकनाथ केस, देन केशवानंद भारती केस, देन मिनेर्वा मिल्स केस. ये 5 केसेस एक ही इशू से रिलेटेड है, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए हैं. कुछ कुछ सालों के गैप में ये केसेस के में जजमेंट आते रहे. शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से अमेंड कर सकती है. मींस पार्लियामेंट को ही सारी पावर दे दी, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं. सज्जन सिंह में अपहेल्ड किया गया, गोलकनाथ में ओवर रूल हो गया. गोलकनाथ में कहा नहीं, पार्लियामेंट कैन नॉट इवन टच द फंडामेंटल राइट्स. मीन से दोनों एक्सट्रीम एंड थे. इन सज्जन सिंह पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दे दी, पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा एग्जाम्पलरी पावर्स दे दी, एंड गोलकनाथ में पार्लियामेंट से सारी पावर्स छीन ली. केशवानंद भारती केस इन दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं आता है, जहां पार्लियामेंट को पावर्स तो दी गई अमेंड करने की, बट साथ साथ ये कंडीशन भी लगाई गई कि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई केशवानंद भारती इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, क्योंकि जो 1950 से पार्लियामेंट और जुडिशरी का डिस्प्यूट चलता आ रहा था, उसको फाइनली खत्म केशवानंद भारती में किया गया. राइट टू प्रॉपर्टी, बस कॉन्सेप्ट समझ लें. सर वी डू नॉट नीड टू नो द लिस्ट. यस, right to property and how much power does the parliament has? Right to property, yes, गोलकनाथ केस में ये इशू भी रिजॉल्व हुआ था. So yes, but the basic thing that I told you वही था. The Sajjan Singh and the Golaknath were the two extremes, and Keswananda Bharati was somewhere in the between. You need to
नो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज 5 केसेस, देन आई विल कम अप विद अ स्पेशल क्लास ऑन इट. बस पहले आप पढ़कर आइएगा, इट्स योर होमवर्क. अगर हम कुछ पढ़कर आते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं. द लॉ इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इतना आसान नहीं है जितना आसान उसे समझा जाता है. बट यस, इफ यू fall in love with law, then definitely it is going to be very easy. The second doctrine is doctrine of separation of powers. So doctrine of separation of powers तो सुप्रीम कोर्ट को भी इवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप ही कहता है. आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which is a DPSP, directive principle of state policy, given in part 4. What does it say? Let's read. It says that take steps, the state shall take steps to separate judiciary from executive in the public services of the state, and accept this, there is no formal and dogmatic division of power. That's why अगर आपको एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में जाना है स्टेट की, तो पीसीएस एग्जाम होते हैं. लेकिन अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज में जाना है तो जुडिशरी का एक अलग एग्जाम होता है, पीसीएसजे. PCS is conducted by the Public Service Commission. PCSJ is conducted by the high courts of that particular state. There is division of power. There are 3 organs of the government: executive, legislature, and judiciary. And there shall be separation of power between the three. There shall be separation of power between the three. ये आप याद रखिएगा. इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी नहीं कहते हैं ऐसे. इट इज नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, इट इज एल्स, इट इज समथिंग एल्स. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, उस पर हम बाद में आएंगे. Okay, it is not doctrine of separability. It is doctrine of separation of powers. Means the power of governance is in 3 different organs. जो power of governance है, power of governance, it is in 3 different organs. The 3 different organs are executive, legislature, and judiciary. The doctrine of separation of powers says that none of the 3 organs shall interfere in each other's work. Okay, the powers should be separated. ये एग्जीक्यूटिव का वर्क एरिया है, ये जुडिशरी का वर्क एरिया है, और ये लेजिस्लेचर का वर्क एरिया है. ये तीनों ही एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे. बट एज देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, और ये आपका होमवर्क है. द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. व्हाट इज इट? मींस, क्योंकि अगर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर ये तो करप्टली भी काम कर सकते हैं. इफ द लेजिस्लेचर इज कमिंग अप विद रॉन्ग लॉस, तो कौन उनको अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर करता है? जुडिशरी. इफ द एग्जीक्यूटिव इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ देयर purview, then उनके अगेंस्ट, या if the executive is not fulfilling the fundamental rights, उनके अगेंस्ट रिट कौन फाइल करता है? जुडिशरी. सिमिलरली इफ अ जज इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो उनको इम्पीच कौन करता है? लेजिस्लेचर. सो यस, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, but there is an exception to it, the checks and balances. Means all the 3 organs of government keeps the check on each other so that there is a balance maintained. ताकि बैलेंस बना रहे, इसलिए हर एक ऑर्गन गवर्नमेंट का एक दूसरे को चेक करता रहता है, दैट वेदर दे आर वर्किंग लीगली और इलीगली, वेदर दे आर वर्किंग राइटफुली और रॉन्गफुली. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर means that the powers of the 3 organs of government, executive, legislature and judiciary, are separated from each other. अलग से जुडिशरी की पावर्स बताई हुई हैं, अलग से लेजिस्लेचर की पावर बताई हुई है, और अलग से एग्जीक्यूटिव की पावर बताई हुई है. ऑल द 3 organs of government, the powers are completely separated from each other, but at the same time there is checks and balances. Means these 3 organs of the government keeps a check on each other. ये कोई गलत तो नहीं कर रहा है. That is the doctrine of separation of power, which is given in Article 50. Very important. ये जरूर याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया हुआ है, आर्टिकल 50 में. क्लियर? I hope you do not have any doubt. Let's move to the third doctrine, the doctrine of pith and substance. The doctrine of pith and substance. So, pith means true nature, and substance means the most important and essential part of something. What does pith means? True nature and essential. Substance का मतलब होता है the most important or essential part of something. It means whenever a law is made, उसका pith and substance पता किया जाता है. जब भी एक लॉ बना है, सो उस लॉ का जो पिथ है मींस ट्रू नेचर है,
एंड जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका ऑब्जेक्ट है, वो पता किया जाता है। क्यों पता किया जाता है? दिस डॉक्ट्रिन वाज इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन बिकॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी फॉलो होती थी। सो इट इज अ प्री इंडिपेंडेंस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन एंड इट वाज फर्स्ट एक्नॉलेज्ड इन द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Why we you need to know the pith and substance of a law. A law can either be central law or state law, ये तो सभी को पता होगा that a law can either be state law जो एक particular state का होता है, जिसे आप local law भी कह सकते हैं, or the central law, central law which is pan India law जो पूरे इंडिया में फॉलो होता है, state law जो एक particular state में फॉलो होता है, like UP has some specific laws of it on, Rajasthan has its specific laws on it on, so laws can either be state law or central law. So how would we identify that a particular law relates to the central list or state list? There are three lists in the Indian Constitution, seventh schedule. In seventh schedule, there are three lists. वो तीन lists हैं. List one, list two, and list three. List one is central list, union list. List two is state list. List three is concurrent list. Union list के topics पर union government laws बनाएगी. स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, राइट? ये आप सभी को पता है. सो वेदर अ लॉ रिलेट्स टू स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, ये कैसे पता चलेगा? उस लॉ का पिथ एंड सब्सटेंस समझ के. व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ अ लॉ, देन वी विल be able to understand that whether it relates to list 1, list 2 or list 3 of the 7th schedule. Let me give you an example. There is a dispute between a law ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लॉ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई, बिल्कुल उसके कॉन्ट्रावेंशन में स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आ गई. अब कैसे पता चलेगा कि वो लॉ उसमें स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का? व्हेन वी विल आइडेंटिफाई दैट द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द लिस्ट, एंड इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई इट वी नीड टू नो द पिथ एंड सब्सटेंस. सो दैट इज, यस, दैट इज सब्सटेंस. ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, द पिथ एंड सब्सटेंस. Clear. Thank you, Tresik, for identifying it. Let's move to the next doctrine. I hope it is also clear to you. The next doctrine is doctrine of severability. Yes, so this doctrine is also known as doctrine of separability. As the name is itself suggesting, first of all, हम पढ़ते हैं this doctrine is derived from Article 13, Clause 1. Clause 1 of Article 13. Article 13 defines law. Law that can violate a fundamental right. And law की definition के exception में आता है Article 368 का amendment, which is not a law under the definition of Article 13, and that's why constitutional amendment से fundamental right amend हो सकते हैं, abridge हो सकते हैं. So what does Article 13 clause 1 says? If any of the laws enforced in India are inconsistent with the provisions of fundamental rights, it is in part 3. Article 13 is the second article of part 3. Part 3 starts with Article 12 to Article 35. They shall, to the extent, yes, यहाँ से doctrine of severability आई, to that extent, be in of inconsistency be void. वो जितने extent तक inconsistent है, सिर्फ उतने consistent तक void होंगे, and that's why this is known as doctrine of separability. Means the doctrine in which a particular part of a law can be separated or severed from the whole law, and only that part would be declared void. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है. सेवियर मींस अलग कर देना, काट देना. व्हाट डज सेवियर मींस? सेवियर मींस टू टू कीप समथिंग अपार्ट, उसको अलग कर देना. ओके, अलग कर देना. So what do you mean by severability? Whether severability means whether a law has the ability to survive after severing from that particular provision which is in violation of fundamental right. Means आप उस लॉ को ह्यूमन बॉडी समझ लीजिए, और अगर ह्यूमन बॉडी के हाथ को आप काट देंगे, द ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव. अगर आप ह्यूमन बॉडी की गर्दन को काट देंगे, इट कैन नॉट सर्वाइव.
अगर आप ह्यूमन बॉडी के लिम्स को, उंगलियां अगर कट डाउन हो जाएंगी, देन ऑब्वियसली इट में सर्वाइव. इवन इफ द हैंड, द फिंगर्स, okay, or any other part like eyes can be severed from the would be severed from the body, then the human body can survive. But if the heart, the lungs, the neck, if these things have been severed from the body, the human body would not survive. So आप एक लॉ को ह्यूमन बॉडी समझिए. There is a this law, this doctrine applies to pre as well as post constitutional law. एक particular law है. Okay, it applies to pre means 1950 26 जनवरी से जो पहले हुआ करते थे, as well as post constitutional law जो 26 जनवरी 1950 के बाद है. The government bought a law. The law has 120 sections, and out of those 120 sections, four sections were in violation of fundamental right of freedom of speech and expression, just for example. So according to the doctrine of severability, only these four sections would be declared void, and the remaining 116 sections can be valid provided के वो 116 sections survive कर सके बिना इन फोर sections के. Means आपको उस लॉ का पिथ एंड सब्सटेंस समझना होगा. इफ द पिथ एंड सब्सटेंस, और यू में से ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था हर लॉ का अपना एक अलग प्रीएम्बल होता है. अगर उस लॉ का प्रीएम्बल हिंडर नहीं हो रहा है, अगर उस लॉ का जो ऑब्जेक्ट है वो इन फोर सेक्शंस के बिना भी फुलफिल हो रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज टू सर्वाइव. ओके, एंड इफ यू विल सेवियर द हार्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, इट कैन नॉट सर्वाइव, ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा. द हैंड हैड नो रोल टू प्ले इन इट. हैंड एक बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग जरूर देता है, लेकिन अगर हम हैंड को सेवियर कर देंगे तो भी ह्यूमन बॉडी सर्वाइव करेगी. क्लियर? सो अगर एक लॉ का वो पार्ट सेवियर होने के बाद उस लॉ का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ह्यूमन बॉडी का ऑब्जेक्ट है सर्वाइव करना, उस लॉ का भी कुछ ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट स्टिल सर्वाइव कर रहा है, वो फुलफिल हो रहा है, देन द रिमेनिंग पार्ट वुड बी वैलिड एंड ओनली दिस पार्ट वुड बी वॉइड. और अगर इस ये हर्ट है, द पार्ट विच इज इन वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज एट द हर्ट ऑफ दैट लॉ, means without that provision the object of the law would not be fulfilled or would be changed, then the whole law would be declared void. It is the limitation of doctrine of severability. Are you clear that what is doctrine of severability? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सेपरेट करने की एबिलिटी एक लॉ की इस डॉक्ट्रिन के अंदर चेक होती है. नॉट ऑल द प्रोविजंस ऑफ अ लॉ में वायलेट अ फंडामेंटल राइट. हो सकता है 1800 से एक लॉ चलता आ रहा है इंडिया में, और जैसे ही 26 जनवरी 1950 आया, उस लॉ के कुछ लाइक अ लॉ रिलेटेड टू सेंसरशिप. ओके, बट मीडिया, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो मीडिया कैन रिपोर्ट एनीथिंग. तो लॉ रिलेटेड टू सेंसरशिप में कुछ आउट ऑफ द होल सेक्शंस, कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के वायलेशन में थे, और अगर उन सेक्शंस को हटा दिया जाए तो बाकी का लॉ ऑल राइट है, दैट डू नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट. So only that particular provision would be declared void and the remaining part would be valid if they are able to get separated from it. अगर उन provisions के हटने के बाद भी उसका object change नहीं हो रहा है तो. Are you clear? I hope you are clear with doctrine of severability, also known as doctrine of separability. It was an easy doctrine, तो इतना मुश्किल नहीं था समझना. And the last doctrine is doctrine of eclipse. Doctrine of eclipse इसको क्यों कहते हैं? Doctrine of eclipse, first of all, remember that it applies only to pre-constitutional law. And before understanding doctrine of eclipse, it do not applies to post constitutional law. 26 जनवरी 1950 के बाद जो laws आए वो उन पर apply नहीं होती है. And doctrine of eclipse also came from article 13 clause 1 and 13 clause 2. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को समझने से पहले आप तीन टर्म समझिए: वैलिड एंड वॉइड ab initio एंड ओनली वॉइड. जिसको हम वॉइडेबल इज समथिंग डिफरेंट, वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं. आप वॉइड समझिए. इन तीनों में क्या डिफरेंस है? वैलिड इज अ वैलिड लॉ विच इज एनफोर्सेबल, नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड इट. वॉइड ab initio मींस वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द इनिशियल डे, जिस दिन से बना है उस दिन से ही वॉइड है. इट इज स्टिल बॉर्न चाइल्ड.
स्टिल बॉर्न चाइल्ड मतलब वो मरा हुआ ही पैदा हुआ है. इट इज void फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ओके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द डेट इट इज बॉर्न, ये जब से पैदा हुआ है तब से ये मरा हुआ है. void means it it is it died. Okay, void means it is zero, but not from the day of its making. तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है that which of the following laws are which of the following laws if inconsistent with fundamental rights are void ab initio, pre-constitutional law or post-constitutional law, what would be your answer? Only post-constitutional laws. Pre-constitutional laws are never void ab initio. Let me give you an easy example. 1800 से एक लॉ चलता आ रहा है. 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था वो उसके प्रोविजंस के अल्ट्रा वायस हो गया. Okay, it is in violation of fundamental rights, and that's why on 26 January 1950 the law was declared void, but it is not void ab initio. Why? Because for the time phase of it from 1800 to 1950 इतने टाइम के लिए वो वैलिड था, उसके बाद वो void हो गया. So a pre-constitutional law can never be void ab initio. वो from the very beginning retrospective date से void नहीं होगा, वो void हो जाएगा जब constitution enforce हुआ, if it is in violation of constitution of India. But what is void ab initio? If a new law comes to India, like in 2021, government comes up with a law that violates the fundamental rights, then the Supreme Court will declare it void ab initio. From the very beginning, it is void. क्योंकि Constitution of India is in force right now, so no law can come. Remember this thing. A post-constitutional law, if in violation of fundamental right, is void ab initio. And a pre-constitutional law, when the if in violation of fundamental right, is void when the Constitution of India was enforced, and before that it was valid. ओके, सबसे पहले ये चीज समझिए. अब दूसरी चीज समझिए. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर तो अप्लाई नहीं होता, बिकॉज दे आर वॉइड एब इनिशियो. वो तो जैसे ही बने वो उसी मूवमेंट से वॉइड है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में है उस वक्त. बट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तब बने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था. सो एट दैट टाइम दे वर वैलिड. सो ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स is applied. What is doctrine of eclipse? Doctrine of eclipse says, doctrine of eclipse says, eclipse का मतलब क्या होता है? ग्रहण. Have you heard about solar eclipse? Have you heard about lunar eclipse? सोलर एक्लिप्स में अर्थ एंड सन के बीच मून आ जाता है. ल्यूनर एक्लिप्स में मून एंड सन के बीच अर्थ आ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये दो ऑब्जेक्ट्स नजर नहीं आते. इन सोलर एक्लिप्स वी आर नॉट एबल टू सी द सन. इन ल्यूनर एक्लिप्स वी आर नॉट एबल टू सी द moon. So what does this actually mean? We are not able to see, but they exist. We, so the gist is that we can't see, but they exist, right? हम देख नहीं सकते लेकिन वो exist करते हैं. So that is the doctrine of eclipse. A law when it is applied when law violates the fundamental rights. जब एक law ने fundamental right को violate किया, but parliament ने उसको specifically उसको void declare नहीं किया, तो वो लॉ इनऑपरेट जरूर हो जाएगा, एक डोरमेंट पोजीशन में चला जाएगा, हाइबरनेशन में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है. इन सच अ केस द फंडामेंटल राइट ओवरशैडोज मींस एक्लिप्स कर देता है उस लॉ को एंड मेक्स इट अनएनफोर्सेबल बट नॉट वॉइड एब इनिशियो. वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है, वो सिर्फ अनएनफोर्सेबल हो जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय अनएनफोर्सेबल? लेट मी गिव यू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हाउ इट इज वॉइड एब इनिशियो. Tisha, what is a post-constitutional law? A law that came after 26 January 1950. Post-constitutional law. Listen to me carefully now. दोबारा से समझाता हूँ. Post-constitutional law means a law which came after the enforcement of Constitution. Constitution of India 26 January 1950 को enact हुआ, enforce हुआ. उसके बाद जो भी लॉ बना वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है तो वो वॉइड एब इनिशियो ही होगा ना. Means today in 2021 the Parliament of India comes up with a law which violates right to equality. Then क्या वो कर सकता है? Because when they are making the law, right to equality is already a fundamental right.
सो दैट लॉ वुड बी void फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. वो जैसे ही बना वो void है. दैट इज void ab initio. Clear? Yes, Traffic. The reason that you told in the live chat is absolutely correct. तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है कि हम उन लॉस को देख नहीं सकते हैं. वो लॉ एनफोर्सेबल नहीं है. दे आर अनएनफोर्सेबल बिकॉज दे आर इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ऑफ फंडामेंटल राइट हैड क्रिएटेड अ एक्लिप्स ओवर देम, but they are present. They are not void ab initio. Like right to property was a fundamental right till 1978. The laws that were related to right to property, that were against right to property, I'm sorry, were unenforceable till 1978. But after 1978, जैसे ही वो ग्रहण हटा, जैसे ही वो फंडामेंटल राइट रिमूव हुआ, वो लॉज वापस से अनफोर्सेबल हो गए. Okay, so just understand that the law is sun, the law is sun, the fundamental right is moon, and the doctrine of eclipse, the fundamental right is moon, and enforceability is this thing. So enforceability and उस लॉ के बीच फंडामेंटल राइट एक्लिप्स क्रिएट कर रहा था. जैसे ही ये फंडामेंटल राइट हटा, वो वापस से अनफोर्सेबल हो गया. जस्ट लाइक द एक्लिप्स थिंग. ओके, जस्ट लाइक सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स एंड lunar eclipse. Clear? So doctrine of eclipse says that if there is a law that violates fundamental right, then the law would be unenforceable until and unless the fundamental right is there. बट केशवानंद भारती में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं. Later on, if that fundamental right had been removed from the constitution, the law would be again declared valid. एक और बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं. There are certain fundamental rights which are available to citizens only. कुछ फंडामेंटल राइट्स तो पर्सन्स को होते हैं, मीन सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, लाइक राइट टू लाइफ. इट इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स एज वेल. बट देर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. वो पर्सन्स को नहीं होते हैं. दे आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स. If government of India comes up with a law that violates a fundamental right which is available to citizens, for instance, it violates the fundamental right of freedom to practice any trade, profession or business. It is available only to citizens. So वो law सिर्फ citizens के context में void होगा. Means the law would be unenforceable, not enforceable on citizens, but the law would be enforceable on foreigners. फॉरनर्स पे एनफोर्सेबल होगा बिकॉज फॉरनर्स डू नॉट हैव दिस फंडामेंटल राइट. सो लॉ वॉइड अब इनिशियो नहीं है. लॉ स्टिल बॉन्ड नहीं है. इट इज ऑपरेटिंग, बट इट इज ऑपरेटिंग ऑन फॉरनर्स, नॉट ऑन सिटीजन. देन आई होप यू आर क्लियर. So it is doctrine of eclipse. Before ending the class, what did you learn today? You learned all the doctrines. You learned all the doctrines. कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. रटा नहीं है, समझा है. सेकंड थिंग, in addition to the doctrines, you came to know about certain important landmark judgments. इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, जिसमें आपको पता चला कि राय बरेली से उनके इलेक्शन कैंडिडेचर को क्वेश्चन किया गया था. दे केम अप विद द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी लगानी पड़ी. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स यू लर्न. I hope it was an interesting class and I was able to make everything clear. Before ending, yes, the word doctrine as well. आपको बता देते हैं डॉक्ट्रिन क्या होता है. एक बात बताइए, डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब क्या है? डॉक्टर क्या सिर्फ वही इंसान होता है जो इलाज करता है? यू ऑल्सो गो फॉर द डॉक्टरेट डिग्री विच इज कॉल्ड पीएचडी. पीएचडी एंड पीएचडी करने वाला बहुत बहुत हायर एजुकेशन होती है वो. इवन आफ्टर मास्टर्स यू गो फॉर पीएचडी. मींस पीएचडी इज हाईली इंटेलेक्चुअल और हाईली लर्नेड पर्सन. So that means that actually means doctrine came from the word doctor. और doctor मतलब चिकित्सक नहीं होता है. Doctor in law, the origin of doctor is teacher. So these are the teachings of law. Or you may say teachings in law. डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे, वो वाले डॉक्टर नहीं थे. स्टेथोस्कोप एंड मतलब वो चिकित्सक नहीं थे, वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर नहीं थे. ही वाज पीएचडी. Okay, so doctor is something, doctor word denotes something else. Okay, okay students,
The scholarship test is already over. I hope you appeared for it yesterday. And the new batches are going to be launched for beginners batch for CLAT 2023. It is starting on 19th of November. The bilingual batch, a 2-year program. You may enroll for it. Evolve, and then a score booster 2022 6 months comprehensive batch by NLU alumni. It is starting on 17th of November, and time भी आपको बताएगा 8:30, because yes, obviously you have very less time remaining. It's a bilingual course, a 6 months program. You may enroll for it. 6 months to mission NLUs. सिर्फ प्रिपेयर करना ही नहीं, प्लान करना भी जरूरी है. So yes, we have come up with these strategic sessions that are going to start from today only. These are strategic sessions. Pooja Aman ma'am, Keshav Malpani sir, and Kirti Bhatnagar ma'am are going to take these strategic sessions. Do appear for them. Okay, do watch these sessions. They will definitely help you. And the Bugs Bounty is on your screen. If you found any inappropriate content in the class, you can report it using the link in the description. Okay, thank you, students. Have a great day ahead. Have a wonderful future, and all the best for you for everything that you aspire. Okay, आप जो भी aspire करते हैं आपको वो मिले. I hope, and that remember that before before you desire for something, be deserving for that. So deserve before you desire. Bye bye. Have a great day.